Hello and welcome to BrainBridge UPSC. I am Vaibhav Kulshrestha. This is answer writing program series for Indian Economy GS paper 3 and this is the 11th question of this series. The question is, what are the major challenges of public distribution system in India? Second part, how can it be made effective and transparent? So there are two parts in the question. This question was asked in 2022. So in the answer format, first in introduction part, we will write about public distribution system. What is PDS? We will write about it. Then come to the main body part where we will answer the main answer of the question. First part, that is major challenges of PDS. So we will provide major challenges of public distribution system. Then how can it be made effective and transparent? Means ये जो चैलेंज है ना, इसका क्या सॉल्यूशन है, इन सभी चैलेंजेस को कैसे हम दूर करें वो यहाँ पे बताना है. देन इन कंक्लूजन एक पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक पाथ हमें बता देना है. ओके, नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट. PDS in India is a vital mechanism for ensuring food security and providing essential commodities to the poor at subsidized prices. However, the PDS faces several challenges that hinder its effectiveness. So this is the linking line between introduction and main body. तो इसके बीच का एक फेविकॉल वाली लाइन है, आप चाहें तो इसको स्किप कर दीजिए. Now come to the major challenges of PDS. First, लीकेज डाइवर्जन बहुत ज़्यादा है. लीकेज बहुत ज़्यादा है. Significant portion of the subsidized food grains is diverted to the open market or lost due to leakage, reducing the quantity available to the intended beneficiary. Second is identification of beneficiary. Inefficient targeting leads to inclusion exclusion errors. Many deserving poor households are left out, while non-eligible households sometimes benefit. तो जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल जा रहा है. तो ये आइडेंटिफिकेशन की भी बड़ी चैलेंज है. देन करप्शन बहुत ज्यादा है. करप्शन एंड माल प्रैक्टिसेस, अनिल कपूर की नायक मूवी आपने देखी ही होगी. सो करप्शन एट वेरियस लेवल्स ऑफ द सप्लाई चेन फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन लीड्स टू इनएफिशिएंसीज एंड लॉस ऑफ रिसोर्सेज. Then poor storage and transportation. Inadequate storage facilities, poor transportation infrastructure result in wastage and spoilage of food grains. Then quality of food grain. Quality बहुत घटिया मिलती है. Quality of food grain distributed through PDS is often substandard, leading to dissatisfaction among beneficiary. ये खराब से अच्छा है, आप मत दो, ज्यादा अच्छा है. Administrative inefficiency. Bureaucratic hurdles and inefficiencies in administration slow down the process and make it difficult for the system to respond to the needs of the beneficiary effectively. And the seventh, awareness and accessibility. Many beneficiaries are not aware of their entitlement, do not have easy access to PDS outlets, especially in remote and rural areas. So these are the major challenges of PDS in India. Now come to the solution part. देखिए, छत्तीसगढ़ मॉडल पीडीएस का बहुत फेमस है. ठीक है, जब हम लोग पीडीएस पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी में तो वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल की भी बात होती है. तो वही सारे जो सॉल्यूशन छत्तीसगढ़ में लागू किए गए हैं उसी को हमें बताना है. सो फर्स्ट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी. हमें आधार यूज करना चाहिए, डिजिटलाइजेशन मेथड यूज करना चाहिए एट फेयर प्राइस शॉप्स एंड मोबाइल एप्लीकेंट्स जिसपे लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई आपका राशन पानी आ चुका है, आके ले जाओ, या कंप्लेंट लॉज करानी है, इंटाइटलमेंट पता चल जाए. सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सेकेंड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, शिफ्टिंग टू डीबीटी वेयर feasible, transferring subsidies directly to bank account of beneficiaries can reduce leakage and ensure that subsidies reach the intended recipients. Then decentralized procurement and distribution. Encouraging local procurement and decentralized distribution can reduce transportation costs, ensure fresher stocks, and increase accountability at the local level. Fourth, improving storage and infrastructure. Modern warehousing, modern scientific warehouses,
with proper ventilation, humidity control and pest management, so that जो क्वालिटी है खाने की, राशन पानी की, वो खराब ना हो. Cold chain facilities should be available. For perishables, setting up cold chain facilities can minimize spoilage. Then enhanced monitoring and vigilance. सोशल ऑडिट होना चाहिए टाइम टू टाइम. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अपनाने चाहिए ताकि कोई अगर कंप्लेंट हो रही है तो उसको फॉलो अप किया जाए. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग पीडीएस ऑफिशियल्स एंड स्टाफ ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, ethical standards, efficient management can improve the overall functioning of the system. And for awareness, lack of awareness, हम public awareness campaign चलाएं. Conducting awareness campaign to educate beneficiary about their rights, entitlement and how to access them can empower them to demand better services. Then community participation involving local self-help group, NGO, community organization in the management and monitoring of PDS can lead to better oversight and accountability. ठीक है, तो इस तरीके से हम पीडीएस को इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट. नाउ कम टू द कंक्लूजन पार्ट. Addressing the challenges of PDS in India require a multifaceted approach involving technology, policy reforms, infrastructure development, and community engagement. By implementing these solutions, the PDS can be made more effective, transparent, responsive to the needs of the poor, ensuring food security, contributing to poverty alleviation. Hence, this question is now answered. So if you like our video, please like, share and subscribe, and also provide your precious feedback in this comment box. Thank you.